a student of class 7. Today our topic is articles. You have already learned about articles. Look at articles. 3 articles in English language. 3 articles in English language. First, a and n. A and n indefinite articles. A and n indefinite articles. And second, first a, second n, and third the. A and n indefinite articles. The is definite articles. The is definite articles. Okay. Now first a and n indefinite articles. Indefinite articles point out common things. Indefinite articles point out common things. Common things means common things, pen, pencil, table, etc. Okay, now second and third the. The is a definite article. The is a definite article. Put out, point out particular things. Particular things means proper. Particular things means proper means खास शयूं. जेको द आर्टिकल आहे, डेफिनेट आर्टिकल आहे, वो पॉइंट आउट माना इशारो कंदो आहे खास शयुनि ॾांहुं. Okay, now these articles are adjectives called demonstrative adjective. These articles are an adjective called demonstrative adjective. Demonstrative kind of adjective means sifat isharo. Sifat isharo means definite and indefinite, mean a and the. These articles are adjectives called demonstrative adjective. Okay, now we'll learn about the usage of indefinite and definite articles. Now we'll learn about the usage of the indefinite articles and definite articles. Okay, first, indefinite articles means a and n. First, indefinite articles a and n. Now a n mean one. A indicate the one thing. Okay, a and mean one and are used before common nouns. And are used before common nouns having singular. One means singular, only one. Or before adjectives qualifying the noun. Before an adjective qualifying the noun. What is an adjective? Adjective is a word which qualify a noun or pronoun. सिफ़त अहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको के इस्म या ज़मीर जे ख़ूबियुनि ख़ामियुनि खे ज़ाहिर करे थो, गुण अवगुण खे ॾेखारे थो. Listen to me carefully. A and mean one and are used before common nouns. A and mean मतलब हिक शइ लाइ इस्तेमालु थींदो आहे या असां किथे यूज़ कंदा आहियूं जेके आम शयूं हूंदियूं उन्हनि जे पहिरियां before having singular or या before an adjectives या सिफ़त जे पहिरियां क्वालिफाइंग दी नाउन जेके नाउन खे क्वालिफाई कंदा उन जी में खूबियूं ख़ामियूं गुण अवगुण खे ज़ाहिर कंदो आहे, क्वालिफाई कंदो. एग्जाम्पल अ पेन इज़ अ कॉमन नाउन, अ गर्ल, एन एप्पल, अ ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, नाउ एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन्स और बिफोर एन एडजेक्टिव qualifying the noun beginning with the vowels. Vowel, how many kinds of letters? 2 kinds of letters. Vowel letters and consonant letters. Only 5. A, E, I, O, U. Vowel letters are silent H. Means n जेको आर्टिकल है असां इसम जे पहिरां यूज़ कंदा आहियूं या एडजेक्टिव जे जेको नाउन खे क्वालिफाई कंदो आहे, पर उन जी स्टार्टिंग जेका हूंदी आहे बिगिनिंग विद दी वावेल लेटर्स, उन जी स्टार्टिंग छा सां हूंदी मीन्स A, E, I, O, U या साइलेंट एच या जंहिं वर्ड जो फर्स्ट लेटर
एशा वो साइलेंट आहे त उन सां असां छा यूज़ कंदा आहियूं एन यूज़ कंदा आहियूं मीन्स एग्जाम्पल बिफोर वावल्स यानी नाउन्स एन ऑफिसर एन इंकपॉट ओ इज़ अ वावल आई इज़ अ वावल ई इज़ अ वावलेटर so now an officer an inkpot an egg many more other words an umbrella an elbow etc. Okay, means first definite articles a and n mean one and are used before noun which noun common noun not a proper noun common noun having singular are before an adjectives qualify the noun. Example a pen, a girl, an apple, a beautiful girl. Now second an article is used before nouns or before an adjectives qualify the noun beginning with the vowel a e i o u. n असां उते भी यूज़ कंदा आहियूं जंहिं वर्ड जो फर्स्ट लेटर वावल हुजे मीन्स ए ई आई ओ यू उन खां अलावा आर साइलेंट एशिया जंहिं वर्ड में फर्स्ट लेटर मीन्स एशिया पर उहो छा आहे साइलेंट आहे साइलेंट नाउ एग्जाम्पल बिफोर वावल्स नाउन एन ऑफिसर ओ इज़ अ वावलेटर राइट एन इंकपॉट आई इज़ अ वावलेटर एन एग ई इज़ अ वावलेटर ओके नाउ बिफोर वावल्स यानी एडजेक्टिव एंड साइलेंट एश बिन्हीं जा एग्जाम्पल गॾु बिफोर वावल्स एडजेक्टिव एंड साइलेंट व्हाट इज एन एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन आर प्रोनाउन सिफ़त अहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको इस्म या ज़मीर जे ख़ूबियुनि ख़ामियुनि गुण अवगुण खे छा थो करे क्वालिफाई थो करे ओके सो नाउ एन इंटेलिजेंट गर्ल इंटेलिजेंट is an adjective right an intelligent boy or girl x right and honest h o n e s t honest no beta honest h is a silent so which article we use n now an hour kalak heko kalak so h is a silent okay and a adjective is a word